So National Cybersecurity Policy of 2013, National Critical Information Infrastructure Protection Center is a nodal agency with respect to critical information infrastructure protection. तो critical information infrastructure protection के लिए हमारे पास है नेशनल क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर. नेशनल क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर. तो हमारा क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन किस किस के लिए? पावर, एनर्जी, टेलीकॉम, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस, गवर्नमेंट स्ट्रैटेजी एंड पब्लिक इंटरप्राइजेस. इट हैज़ बीन कॉन्स्टिट्यूटेड इन द IT एक्ट. तो हमारा नेशनल क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर जो नोडल एजेंसी है क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन के लिए कॉन्स्टिट्यूटेड है अंडर द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट. तो फिर हमारा सर्टेन है तो हैज़ बीन डेजिग्नेटेड नोडल एजेंसी फॉर रिस्पॉन्डिंग साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट्स होते हैं. तो उसके लिए कौन सी नोडल एजेंसी है? इट इज कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम हैज़ बीन डेजिग्नेटेड टू एक्ट एज अ नोडल एजेंसी फॉर रिस्पॉन्सिंग द साइबर रिस्पॉन्डिंग द कंप्यूटर सिक्योरिटी थ्रेट. तो IT एक्ट देखें 2008 का, सर्टेन हैज़ बीन डेजिग्नेटेड टू सर्व द नोडल एजेंसी टू परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन. तो सर्टेन के काम क्या क्या है? एक तो कलेक्ट करना, एनालाइज करना, डिसेमिनेट करना ऑन द इन्फॉर्मेशन साइबर इंसिडेंट होता है तो उसको कलेक्ट करना, एनालाइज करना, डिसेमिनेशन करना ऑफ द इन्फॉर्मेशन साइबर इंसिडेंट, फोरकास्ट एंड अलर्ट्स बाय द साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट्स. अलर्ट्स करना, फोरकास्ट करना अगर होने वाला हो अगर कोई इंसिडेंट, एंड इमरजेंसी मेजर फॉर हैंडलिंग साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट. इमरजेंसी मेजर्स कौन से लेने हैं? कोऑर्डिनेशन ऑफ द साइबर सिक्योरिटी रिस्पॉन्स एक्टिविटीज़. तो कोऑर्डिनेट करना दूसरी एजेंसी के साथ फॉर द साइबर सिक्योरिटी साइबर इंसिडेंट रिस्पॉन्स एक्टिविटीज़. इश्यूज, गाइडलाइन, एडवाइजरी, वल्नरेबिलिटी नोट्स एंड white paper relating to the information security practices, procedure, prevention, response and reporting of the cyber incident. Such other function related to the cyber security may be prescribed. So what are the strategy of CERT-In? That creating security ecosystem, creating assured framework, encouraging open standards, strengthening regulatory framework, creating mechanism for security threat early warning, vulnerability management, response to security threat, securing e-governance services, production resilient to the critical information infrastructure, promotion of the research and development in the cyber security, reducing supply chain risk and human resource development, fostering education training program both in formal and informal sector to support national cyber security needs and build capacity, creating cyber security awareness, developing effective public private partnership to develop bilateral multilateral relationship in the area of cyber security other country, information sharing and cooperation, and prioritize approach for implementation. What are the issue with the policy in cyber security policy? Cyber security emerging from a new technology, for example cloud computing, it not address, and increase cyber attack, for example Red Eco, Shadowpad, and increase use of social networking site against the cyber security. So there's a social networking sites, increase of social networking site. It strengthens the cyber forensic capacity building and sharing of information by private entities. It's a threat to national security. No outright policy to strengthen the digital privacy right. Need for special provision, for example for the cyber attack on this critical infrastructure, and need for nationwide cyber security training of all workforce using technology, and we must also tell do's and don'ts. Need for the internet to lockdown of all the important critical infrastructure including satellite, and increase of the number of cyber security professionals at all level of critical infrastructure. And Cyber Surakshit Bharat initiative must include training apart from awareness and capacity building. So Cyber Surakshit Bharat initiative is awareness and capacity building of government official, but it also include training. There is no training in the cyber security Bharat initiative. There should be training, awareness along with the awareness and capacity building of government official.